Assalamu alaikum, welcome to my YouTube चैनल टेक जोन 1.0। अच्छा, आज का टॉपिक है फ्रीलांसिंग के हवाले से कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। इस फ्रीलांसिंग तो हम गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारे पास जो पहली वेबसाइट आती है उसके वो है freelancer.com। तो फ्रीलांसर स्टूडेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेस वेबसाइट which always potential employees to post jobs that freelancers can then bid to complete. Founded in 2009, its headquarters is located in Sydney, Australia. Though it also has offices in Vancouver, London, Vilnius, and Jakarta, so on. So ये हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं फाइवर, जिसमें फाइवर अपवर्क और लिंक्डइन है। तो हमारा मेन क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग इट्स फाइनेंस प्रॉपर वेबसाइट। फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो आपको एक सेल्फ एम्प्लॉयर्स होते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयर्स और नॉट कम्प्लीटेड अपना सर्टिफाइड करना है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। वो आपको अपवर्क जो है सही डिफाइन करके देगा। अपवर्क में आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि फ्रीलांसिंग है क्या, और अपवर्क सबसे बेस्ट वेबसाइट है फ्रीलांसिंग के लिए। उसके अलावा भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं लेकिन अपवर्क इस वक्त बेस्ट है। अपवर्क हमें बताता है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। द गिग economy is growing fast as more professionals put their skills to use as freelancers. In fact, an Upwork study related that 59 million American professionals were involved in freelancing in 2020, representing more than a third of the United States workforce. What is freelancing and how wide should someone consider become a freelancer? This article defines that freelancing is presents its pros and cons, explain how it differs from full-time work, and outlines the types of freelance work available. What is freelancing? The freelancing freelancing means between freelancing and full-time job, 9 categories of independent फ्रीलांस वर्क। ये सब कुछ आपको जो है इजीली upwork.com पे मिल जाएगा कि upwork पे आप जाके ये सारे आर्टिकल्स वगैरह रीड कर सकते हैं। बट इस फ्रीलांसिंग doing specific work for client without committing to full-time employment. Freelancers often take on multiple projects with different clients, similar to the internal Revenue Service (IRS) considered freelancers to be a self-employed individual। बाकी सब आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।